Assalamu alaikum dear fellows, my name is Saifullah. I welcome you all to the platform of जावेद पब्लिशर। अपनी आज की इस वीडियो में हम क्लास 4 के कंप्यूटर स्टडीज़ के चैप्टर नंबर 5 MS वर्ड टेक्स्ट इन्हेंसमेंट की एक्सरसाइज को सॉल्व करना सीखेंगे। तो चलिए चलते हैं अपनी बुक की तरफ और क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, चूज द करेक्ट ऑप्शन। डैश इज अ वर्टिकल स्पेस बिटवीन द लाइन्स ऑफ टेक्स्ट इन अ पैराग्राफ। Line spacing, paragraph spacing, vertical spacing, या none of these. The right option is line spacing. Dash are used when there is no particular sequence of the text to be followed. Bullets, numbering, points, या none of these. The right option is bullets. Dash is color background behind the selected text or paragraph. Pattern, back color, shapes or shading. The right option is shading. Setting the direction or position of the text in a page is called margin, spacing, alignment, या none of these. The right option is option C, alignment. Our next question is fill in the blanks with the help of given words. And the given words are bullets and numbering, borders, paragraph spacing, justified and left. By default, text is aligned left of the page. The dash alignments sets the text evenly between the right and left margins of the page. Justified. The dash feature is used to represent the text in listed form. Bullets and numbering. Dash is a space above or below a paragraph. Paragraph spacing. Question number 3. Answer the following question. What is the use of bullets and numbering tool in Word? The bullets and numbering feature is used to represent the text in listed form. Question 2. What is text alignment? Text alignment refers to the position of the text with respect to the page margins. What is watermark in the document? Watermarks are faint imprints of text or images that appear behind the text. What does line spacing refers to in MS Word? Line spacing is the vertical space between the lines of text in a paragraph. तो व्यूअर्स, ये थी हमारे चैप्टर नंबर 5 टेक्स्ट इन्हेंसमेंट की एक्सरसाइज। उम्मीद करता हूँ इसके साथ ही आप इस एक्सरसाइज को अब खुद से सॉल्व कर सकते हैं। इन बताए गए फीचर्स की ज़्यादा से ज़्यादा एप्लीकेशन करें ताकि आप इन पर बहुत अच्छे तरीके से अबोध हासिल कर सकें। मैं मिलूंगा आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।